क्वेश्चन नंबर 34 ठीक है, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी सर। क्वेश्चन 34 ठीक है। अच्छा पहले खत्म करते हैं, फिर जो एमसीक्यू आप रह गए वो करते हैं, ठीक है। जी सर। क्वेश्चन नंबर 34 ठीक है, ये है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये आसान है। ये पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ठीक है, ओवेरियन वॉल्यूम ग्रेटर देन 10 ml होती है, ठीक है। फिर इसके इर्द गिर्द मल्टीपल सिस्ट होती है, पेरिफेरी में अरेंज होती है, और जो है हर सिस्ट की साइज 1 सेंटीमीटर से कम होती है, 1 सेंटीमीटर होती है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। और पेरिफेरल लेंस सिस्ट होती है। तो ये डिस्क्राइब करें एमसीक्यू में भी कि जो ये क्या है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ट्रांस abdominal pelvic ultrasound examination, this shows the right ovarian volume of 17 ml, ठीक है, and left ovarian volume of 15 ml. Both ovaries have several small cysts seen within them, measuring approximately 5 ml in a peripheral location. Would like to diagnose PCOS, ठीक है, polycystic ovarian syndrome. Question number 35, an emergency with sudden onset of severe lower abdominal pain. Ultrasound shows an enlarged hypochoric midline mass in addition. Hypochoric midline mass in addition to the cystic mass, and there is free fluid in the pouch of Douglas, most likely diagnosed torsion of ovary, ठीक है। ये आपको क्या रहा है कि 35 में कुछ है, ये समझा रहा है कि there is a hypochoric mass in the center of abdomen or sound, it should no flow uncovered Doppler, ठीक है, and that with it there is a free fluid in the pouch of Douglas होगा, ठीक है, diagnosed ovarian torsion, ठीक है। और फिर there is also sudden onset of severe abdominal pain। अच्छा question 36, which radiological findings would suggest a diagnosis of traumatic cyst rather than simple cyst? A ground glass pattern, ठीक है। ये होते हैं एडनेक्टल सिस्ट में। क्वेश्चन 36 अगर रीड करें तो 38-year-old patient has chronic pelvic pain on the right side. She undergoes transabdominal and transplanted ultrasound examination. This demonstrates a 3 centimeter cyst on the right ovary, but radiological findings suggest a diagnosis of traumatic cyst rather than simple cyst, ठीक है। तो इसमें ग्राउंड ग्लास पैटर्न होती है, क्योंकि इसमें अंदर फ्लूइड होती है ना, ब्लड होती है, तो वो ग्राउंड ग्लास पैटर्न करती है। और अगर इसकी इमेज थोड़ा देख सकते हैं, मेरे ये बस याद करें कि ground glass pattern represents hemorrhages, tiny hemorrhages. So when ground glass pattern is seen in a cyst, it means it is hemorrhagic cyst. ठीक है। Question number 37, multiple leiomyomas. What urologic sign would be concerning for sarcomatous transformation? Rapid change in size, ठीक है। Rapid change in size जब होती है leiomyoma में, तो मतलब ये leiomyoma का दूसरा फाइब्रॉइड है। तो वन फाइब्रॉइड तो रैपिड चेंज इन साइज मतलब ये कि मैलिग्नेंट हो गया, फाइब्रोसार्कोमा को कन्वर्ट हो गया कुछ। Question number 38. What additional finding would suggest a diagnosis of mature teratoma from another type of germ cell tumor? Fat density on plain film, ठीक है। Mature teratoma में क्या होता है? Fat density होती है। Mature teratoma has fat density on plain film. Mature teratoma has fat density on plain film. Question number 39. Urinary frequency. Patient comes with urinary frequency dysuria and offensive urine prematuria, ठीक है। Offensive urine prematuria मतलब यूरिन के अंदर पस है, ठीक है। When film shows an air fluid level is noted within the bladder lumen. Bladder में भी air fluid level है। What is the most likely causative organism? E. coli, ठीक है। E. coli, ठीक है। इसमें क्या most common cause of UTI is E. coli infection। अच्छा एक मिनट, एक्सपेरिमेंट तो पढ़ते हैं। तो 9 answer D. E. coli. The common causative organism is E. coli of UTI, ठीक है। और wide range of organism may be responsible। तो UTI का सबसे कॉमन कॉज क्या E. coli है, ठीक है। Question number 40, involved in a road traffic accident. Involved in a road traffic accident, PCD shows pelvic flexures,
An elliptical activation of contrast genital bladder most likely diagnosed subseroral bladder rupture. ठीक है, elliptical contrast shows subseroral bladder rupture. यह जो है extracapsular bladder rupture है. ठीक है, subserosal या extracapsular bladder rupture एक चीज है. elliptical contrast activation contrast shows subseroral bladder rupture. ठीक है. And, the extraperitoneal injury shows dense flame-shaped collection in the contrast material in the pelvis. Intraperitoneal rupture contrast material around outline loop of bowel. ठीक है, अच्छा और ये इसमें ठीक है. अच्छा, सो ये रेयर फॉर्म ब्लड रप्चर है. ठीक है, और इसमें ये है कि जो सबसेरोल ब्लड रप्चर में ये होता है कि elliptical contrast एजेंट. अब देखो, इंट्रापेरिटोनियल ब्लड रप्चर, एक्स्ट्रापेरिटोनियल ब्लड रप्चर है, और ये है सबसेरोल ब्लड रप्चर. सबसेरोल ब्लड रप्चर में elliptical activation of contrast agent to bladder है. ठीक है, इंट्रापेरिटोनियल ब्लड रप्चर में क्या होता है, contrast material outline bowel loops. एंड एक्स्ट्रापेरिटोनियल ब्लड रप्चर में क्या होता है, dense flame shaped collection of contrast material in the pelvis. और ये जो है अभी हमने पढ़ा था, सबसेरोल ब्लड रप्चर में क्या होता है, elliptical contrast material. सबसेरोल ब्लड रप्चर में क्या होता है, elliptical activation of contrast agent to bladder. ठीक है, ये तीन ब्लड रप्चर्स है. Question 41. Return from a holiday to Egypt. Patient has dysuria and urethral discharge. History of joint pain. ठीक है, and intermittent eye pain and irritation. With joint pain, dysuria and eye irritation, diagnosis क्या आती है, Reiter syndrome. Retrograde urethrogram shows stricture formation and luminal irregularity in penile urethra. Most likely diagnosis is Reiter syndrome. ठीक है, eye pain, irritation, dysuria and joint pain means Reiter syndrome. Question 42. With the following appearances on radioclinic imaging will favor diagnosis of epidermal arthritis or testicular tumor. एपिडर्मल आर्थराइटिस में होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है, तो इसके अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगी. Mildly increased perfusion through spermatic cord vessels with increased activity of scrotal contents on static image. ठीक है, mildly increased perfusion through spermatic cord vessel. क्वेश्चन 42 में अगर हम दूसरी ऑप्शन पढ़े तो ये सेंस बनते हैं. ठीक, इंक्रीज परफ्यूजन, डिक्रीज अपटेक, ये भी गलत है. कर्बिनाइन इंक्रीज एक्टिविटी इमीडिएटली अटैक. इसमें डिफ्यूज इंक्रीज, तो फिर नबिन साइन. ठीक है, ये भी गलत है. मार्क इंक्रीज परफ्यूजन तो स्पर्मेटिक cord vessels. ठीक है, with increased activity of scrotal content static image, ये बेस्ट आंसर है. बाकी स्लाइड इंक्रीज परफ्यूजन नहीं, इंक्रीज मार्क इंक्रीज, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, ऑर्काइटिस है. Question 43. Intravenous pyelogram shows early filling of a bulbous terminal right ureter which protrudes into the bladder lumen. अच्छा, ये वही कह रहा है कि यूट्रोसिल के बारे में कह रहा है. तो यूट्रोसिल की इमेज है, ये बायलैटरल यूट्रोसिल है. ठीक है, इसको डिस्क्राइब करेगा. there is a bulbous terminal right ureter which protrudes into the bladder lumen at the ureteral insertion with a surrounding translucent halo. ठीक है, फिर there is a prominence of a single proximal ureter and a mild pelvic dilatation on the right. Mild pelvic dilatation on the right. A micturating cystoureterogram shows a round lucent filling defect near the trigone which effaces with increased bladder distension. ठीक है, अब ये कि marked filling defect seen near trigone which effaces near, जब bladder distend हो जाता है तो ये खत्म हो जाता है. ठीक है, ये filling defect. और ultrasound shows a cystic mass at the right ureteric orifice at the trigone. The cystic mass at the right ureteric orifice at the trigone. ठीक है, ये कह रहा है. Horizontal पर the right kidney looks normal, right kidney is normal. During the scan there seems to be protein fill and empty with ureteral peristalsis. Most likely diagnosis simple ureterocele. ठीक है, ये वो ureterocele है. Okay.
क्वेश्चन नंबर 44 माउंटेन बाइकर सस्टेन अ स्ट्रैडल इंजरी जब स्ट्रैडल इंजरी आ जाते हैं तो रप्चर ऑफ द bulbous tube there, ठीक है. Strand injury few months later, increasing difficulty in passing urine, which of the following appearances are most likely to be seen on retrograde radiography, and abrupt short segment of narrowing in the bulbous tube there, ठीक है. ये याद करें कि स्ट्राइडल इंजरी में बाइकर बी फॉर bulbous tube injury और फिर इसको डिस्क्राइब कर abrupt narrowing post trauma bulbous tube, ठीक है. आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 Horizon shows rounded mass of variable reflectivity at the superior aspect of the right testes with surrounding increased Doppler flow and a small hydrocele. Most likely diagnosis torsion of the appendix testes. ठीक है ये इमेज है Horizon shows a rounded mass of variable reflectivity at the superior aspect of the right kidney with surrounding mild hydrocele. Diagnosis क्या है torsion of the appendix testes. ठीक है और इसमें Doppler flow भी ज़्यादा नजर आता है जिसमें Doppler image हमारे पास नहीं है बस rounded mass of mixed reflectivity at the superior aspect of testes with mild hydrocele. तो diagnosis क्या है torsion of the appendix testes. इसकी अगर थोड़ा सा MCQ पढ़ी पढ़ी थी तो हिस्ट्री क्या है When an 8-year-old boy presents acutely with a swollen inflamed and very tender right testicle, a ultrasound scan shows the round mass of variable reflectivity at the superior aspect of the right testis with surrounding increased Doppler flow and a small hydrocele, most likely diagnosis torsion of the appendix testis. ठीक है Question number 46. Our sound shows a well-defined hyporeflective paratesticular mass which shows hypervascularity on color Doppler. Most likely diagnosis scrotal hemangioma. ठीक है बस ये कि it's a mass around the testes which was hypervascularity on color Doppler. Diagnosis hemangioma है ठीक है और आप पूरी MCQ पढ़ ले तो पता चलेगा कि इसमें कोई भी malignant changes नहीं है. 30-year-old man presents with a 2-month history of painless right scrotal swelling. Our sound scan shows a well-defined hyperreflective paratesticular mass which shows hypervascularity on color Doppler. Most likely diagnosis scrotal hemangioma. बाकी कोई सेंस नहीं बन रहा इन सब में से इतना ज़्यादा ब्लड फ्लो नहीं हाइपरवैस्कुलरिटी नहीं होती पैरासेक्युलर हाइपोमा में भी नहीं होती सिस्टेडनोमा हिस्टियोसाइटोमा इनमें फ्लो नहीं होती थी ज़्यादा एडोमेट्रॉइड ट्यूमर इसमें थोड़ा सा फ्लो होगा लेकिन फिर इसमें सिस्टिक चेंजेस होंगे और डिफरेंट अपीयरेंस होगी नस्बत इसके क्वेश्चन नंबर 47 प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट कैंसर what feature best denotes local disease recurrence ठीक है low high signal intensity in the prostate bed on axial T2 sequence ठीक है when patient has prostate cancer then high signal intensity in prostate bed on axial T2 shows recurrence low signal intensity shows fibrosis and high signal intensity shows fat which shows cancer ठीक है fat या edema and which shows cancer बाकी कोई ऑप्शन सेंस नहीं बन रहा अगर एक्सप्लेनिंग पड़े 47 में 47 The usual post-prostatectomy appearance is low signal fibrosis. Increased signal on T2 in the setting of rising PSA is indicated of local recurrence. Question number. अच्छा इसमें पूरी MCQ अगर पढ़े तो इसमें ये भी कह रहा है कि increased prostate antigen है. 65-year-old man presented 3 years after prostatectomy for prostate cancer with increasing prostate-specific antigen. An MRI of the pelvis was performed. What feature best denotes local disease recurrence? PSA भी increased है तो ये है कि high signal in prostate bed on axial T2 sequences. T2 पर high signal होगा ठीक है axial. Question 48. Man with a history of infertility, recurrent urinary infections, and hematuria assessed with transrectal TRUS transrectal ultrasound scan, which shows a midline cystic mass in the prostate gland which does not communicate with the urethra. Most likely diagnosis Mullerian duct cyst. ठीक है Mullerian duct cyst ये कह रहा है कि जो है ये prostate है ठीक है तो लोब है prostate की right lobe है left lobe है इसमें midline cystic mass है